students, now in today's lecture we will derive integrated rate equation for a first order reactions. We know that integrated rate equation for a different reactions or a different order reaction will be different. Now what is meant by first order reaction? The reaction in which the rate of reaction is depending upon first power or one power of reactant is known as first order reactions. तो चलो लिख लेते हैं what is meant by first order reaction. Then first order reaction means rate of reaction depend upon one power of reactant. Then this reaction is known as a first order reaction. Let us assume कि हमें इस तरह से reaction है, reactant is converting in a product. Now rate for this reaction we can write in this way: rate equal to minus d by dt r equal to k into r and power will be 1. Now just we will simplify. r को मैं नीचे ले लेता हूँ, dt will go in multiplication. So we can write it dr upon r equal to और माइनस साइन भी दे देते हैं. So we can write it minus k dt. Now just to take integration in both sides. So just I will write it take integration in both sides. So we get this equations ln r equal to minus kt plus I. Now just I will give number this equation as equation number 1. Now this I will give as equation number 2. Now we want to find what is the value of integration constant. Here I is what? Then I is nothing but an integration constant. Just I will write it here. I क्या है? Then it is an integration constant. Now we want to find a value of integration constant. So just we assume that initial time t equal to 0. When time t equal to 0, then concentration R will be R0. So now put the value in these equations. So initial concentration at time t equal to ln R0 equal to minus k into 0 plus I. So हमें मिली integration constant I की value. Now the value of integration constant I is ln R0. Now put this value of integration constant I in a equation number 2. So in equation 2, just I will write it here, put value of I in equation 2. तो चलो रख देते हैं value I equal to ln R0. So I will get this equation ln R equal to minus kt plus ln R0. Now when you compare this mathematical equation, just I give as a number equation number 3. So equation 3 is just like a y equal to mx plus c. तो यहाँ पर c क्या है? Then it is a constant ln R0. Now what is y? Then it is a concentration ln R, and as a x here t. So when I will draw the graph of ln R, suppose when I will draw the graph of ln R versus a time t. Now on y axis I will take a ln R. Now on x axis I will take a time. Then I will get a straight line graph. In this way I will get a straight line graph. Now the slope above this straight line, slope when I will take, then we get this value of slope equal to minus k. And just extrapolate to this graph. Then extrapolating of this straight line graph, I will get intercept, and the value of intercept, whatever the value of intercept will be ln R0. So by using this graphical method, one can obtain what is the value of constant k. Now just to simplify this equation number 3, ln R0 will go in, or minus kt go in this side and ln R go in this side. So I will get equation kt equal to ln R0 minus ln R. Now further simplify these equations. तो subtraction है यानी division में जाएगा. So I will get this equation
K इक्वल टू 1 अपॉन T इंटू, और चलो इसको इस तरह से लिख लेता हूं पहले एक स्टेप मोर, KT इक्वल टू आई हैव ऑब्टेन ln R0 divided by R. KT equal to ln R0 divided by R. Now further simplification of this equation, further simplifications. So we get this value of rate equation K equal to 1 upon T into ln R0 upon R. So this is equation number 4. This equation number 4 giving us a rate equation for a first order reactions. So I will give this as equation number 4. Now ln we can remove by using a log. So we can write this equation in this way also. Then K equal to 1 upon T log or 1 upon T, or just ln when we remove we get 2.303. So 2.303 divided by T. In multiplication log R0 upon R. I will get log R0 upon R. So this is equation number 4, or we can say it's equation number 5. By using this equation we can get what is the value of constant, rate constant for a first order reaction. Now equation 5 we can simplify in this way. T go in this side, so it will be a KT upon 2.303 equal to log R0 divided by R. So now when we draw the graph of log R0 by R versus T, then we get the straight line graph. Suppose we have drawn this graph on x-axis and on y-axis. Now on x-axis I have taken log R0 upon R, and on y-axis I will take a time t. Then the graph will be obtained as straight line graph. This type of straight line graph will be obtained. And the slope of this straight line, when we take the slope of this straight line, then we get the value of slope will be K upon 2.303. Slope will be obtained K upon 2.303. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप को 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम. नाउ दिस इक्वेशन नंबर 3. नाउ इक्वेशन नंबर 3 वी आर राइटिंग एट a two different time. Suppose when we are assuming that suppose time t equal to t1, then concentration R will be R1. So now at this time we can write equation in this way, that ln R1 equal to minus KT1 plus ln R0. Now this we giving as equation number 6. We have obtained equation number 6. Now we are writing at other different time. Suppose time t equal to t2 and concentration R at this time will be a R2. तो चलो इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ln R2 equal to minus KT2 plus ln R0. This we obtain as equation number 7. Now simplifying these things, suppose from equation 7 subtract equation 6. So from equation 7 equation number 6 को minus करते हैं. So we can write in this way, ln R2 minus ln R1 equal to, अब राइट हैंड साइड के माइनस करेंगे, minus KT1 or just we writing as it is KT1 plus ln R0 minus in bracket minus KT2. ये माइनस है, उसके बाद माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस होगा, और इसको माइनस करेंगे माइनस ln R0 सब्सट्रैक्ट करते हैं. सो ये इक्वेशन मैंने एज इट इज लिखा. अब माइनस KT2 उसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ, इट इज अ प्लस. नाउ सिंप्लीफाई दिस थिंग्स. सो हम क्या कट कर सकते हैं, तो ln R0 कट कर सकते हैं. अब इस दोनों का सब्सट्रैक्शन यानी डिवीजन, तो इस तरह से लिख सकते हैं ln R2 divided by R1. ln R2 divided by R1 equal to हमें मिलता है
के T2 माइनस के T2 माइनस के T1। अब इनमें से K कॉमन निकल जाएगा तो किस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, K इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू ln ब्रैकेट में R2 डिवाइडेड बाय R1। तो चलो अब आगे यहां से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं आगे। सो नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन। वी कैन राइट दैट K इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 इनटू ब्रैकेट ln R2 अपॉन R1। तो चलो इसको दे दें इक्वेशन नंबर 8 और वी कैन राइट फर्दर इन दिस वे आल्सो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1। 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 ln को निकालते हैं तो log रखेंगे, so it will be a log R2 अपॉन R1। so हमारे पास यदि दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है और हम उसका रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, then by using either or any reaction one can get a value। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। नाउ सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, तो उसमें से भी हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। नाउ ln R0 विल कम इन दिस साइड, तो ये इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं ln R अपॉन और जस्ट माइनस ln R0 इक्वल टू माइनस KT। अब ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसको इक्वेशन इस तरह से होगा ln R अपॉन R0 इक्वल टू माइनस KT। अब इक्वेशन की बोथ साइड पर हम लेते हैं एंटी लॉग। सो जस्ट आई विल राइट दिस हियर, टेक एंटी लॉग। अब दोनों साइड पर जब हम एंटी लॉग लेंगे देन वी गेट इक्वेशन इन दिस वे R अपॉन R0, कंसंट्रेशन R अपॉन R0 इक्वल टू e रेज़ टू माइनस KT। तो आगे सिंप्लीफिकेशन से हमें मिलेगा ये इक्वेशन कि वैल्यू ऑफ R इक्वल टू R0 इंटू e रेज़ टू माइनस KT। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगी। अब स्टूडेंट्स ये दो बहुत सारे रिएक्शंस है। सपोज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 into N2O4 or we can write it nitrogen dioxide and oxygen। So now this equation follow the first order reactions. In our day-to-day life many reaction occurs. Suppose natural or artificial radioactive decay, it is also first order reaction. For example, we have a radium. Now you know that radium atomic number 86 and atomic mass number 226. Now it's naturally radio decay occurs and it emit a alpha particle helium 2He4 and we get a radon 86 and 220। so ये radioactive decay भी first order reaction mechanism को follow करता है। so dear students, in today's lecture we have discussed integrated rate equation for first order reactions। so उसके सारे ग्राफ हमने डिस्कस किए। don't forget to like or share and subscribe। see you in next lecture।